and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Rishika Baru. Our top focus story: the World Health Organization has released a report according to which India's COVID-19 deaths are the highest in the world. According to the WHO report, over 47 lakh people died of COVID in India. The Indian government's estimate is only 5.23 lakh. The World Health Organization estimate there is 9 times more than what India's own report is suggesting. India has hit out the study. Our government has said that the WHO study lacks academic rigor and the World Health Organization hasn't addressed the Indian government's concerns. What these concerns are is something that the government hasn't made public just yet. The World Health Organization has estimated that these are the figures. These are a mean estimate. The India says, India has in fact lashed out and said that these are based on some other estimates and the World Health Organization study disregards the actual data. We understand that this report has covered what they label as excess mortality in the years spanning COVID-19 pandemic. India has been clearly telling WHO with all humility and through diplomatic channels, with data, with rational reasoning, that we do not agree with the methodology that has been followed. We have a robust system of the CRS and we released that report yesterday, and as per law and the timeline, the 2021 numbers will also come up. And while 1 year after the deadly second wave of the COVID-19 pandemic, the nightmare for many has still not ended with everything that it took away. This is a report a year later. "45-year-old Shaista Yasmeen, sister Sabiha and mother are yet to come to terms with the reality of losing their brother Sajid to COVID last year. पिछली बार की जो हाहाकार थी वो कभी ना सोचा ना कभी देखा और ना होनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली 2-3 दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब रही। उसके बाद जब उसकी ब्रीदिंग तेज चलने लगी अचानक से, बातचीत कर रहा था, ठीक था, तो हमें लगा कि शायद प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी जगह एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, पड़ोस में फ़ोन किया सबसे पहले तो कि प्लीज़ आ जाओ। कोई नहीं आया। रिश्तेदारों में फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस वक्त नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। 35-year-old Sajid, who was differently abled following a spinal injury 15 years ago, died in an ambulance after not getting admission in several hospitals. जगह जगह हॉस्पिटल ले गए, किसी ने नहीं लिया, कोई लेने को तैयार नहीं। आखिरकार वो उसकी डेथ उसी में हो गई, गाड़ी में ही। बस फिर हम घर ले आए। हमारे और 2 कजन्स के साथ प्रॉब्लम थी सेम, ये कोविड ही हुआ था, तो वो सब उधर लगे हुए थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और तीसरे या चौथे दिन उनकी डेथ हो गई। बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा लड़का, जिसके एक 7वीं क्लास में बच्चा, एक 10वीं क्लास में। इधर तो बहुत ही छोटे बच्चे थे जो मेरे कज़न हैं यहाँ पे, उसका भी एक बच्चा, तो उसे तो ये भी नहीं पता फादर मेरे नहीं रहे। लड़की थोड़ी सी बड़ी है, तो बहुत बुरा टाइम था, नहीं बर्दाश्त होता याद करके। Sajid's mother Raisa Khatun believes her son would have survived had he received adequate medical care. The family, which owns a small boutique in northwest Delhi, has got no compensation from the Delhi government. इस बच्ची में बहुत हिम्मत है मेरी, ये सब कुछ कर रही थी जब से। बाकी तो भैया बच्चा ये रही, जो भी था, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत खराब थी, उस वक्त ही मैं कुछ नहीं समझ पाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं तो ठीक था, ऐसे थोड़ा सा खांसी, नज़ला हल्का सा लग रहा। ये रोने लगी तो कहने लगा मैं तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बस कोई मुझे ऑक्सीजन दे देगा। अब ऑक्सीजन तक पहुंच ही नहीं पाया, शायद ठीक हो जाता उस वक्त। यानी अगर स्टीमर था ना, उसके भी चौगने रेट लगा देते, जो 100 रुपए की चीज है उसके भी इतने रेट लगा दे और गायब भी कर दी मार्केट से। अब पेशेंट को देखो या पागलों की तरह से केमिस्ट ढूंढो, हाथ पैर जोड़ लिए केमिस्ट्रियों के भी, वो जो हर वक्त
दवाइयाँ हमारे लिए लाते हैं, वो भी तैयार, वो कह रहे है ही नहीं, हम क्या करें, है ही नहीं, पीछे से ही सारा माल रोक लिया गया है। ऐसे में बजाय हेल्प करने के, इतना बुरा टाइम था, सारे बच्चों को मार दिया। क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए, जो कहा था मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे? कुछ नहीं किया। अगर जो वादे किए उसको 20% लोगों को भी शायद फायदा ना हुआ हो। According to government data, over 26,000 people died of COVID in Delhi alone. But there were many who were never included in the government's data. Sajid is one of them. 63-year-old Ashok Kumar and his 56-year-old wife Meenakshi Kumar got their daughter married just 2 months before the second wave of COVID-19. But their happiness was short-lived. हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल भी केयर नहीं की। मेरे को इतना पता है वो बच सकते थे अगर हॉस्पिटल वाले केयर करते। उसके बाद कभी कोई बीमारी उनको पहले रही है? कभी नहीं, नथिंग, बिल्कुल। बल्कि मैं बीमार रहती हूँ, आए दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन इनको कभी कुछ भी नहीं था। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ये 22 तारीख को जा रहे हैं और 4 दिन में ही 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने पहले बेटी की इन्होंने इतनी खुशी खुशी शादी की है। उसके बाद इतना खुश थे कि चलो अब बच्चों की 2 बेटियों की शादी कर दी, अब हम फ्री हो गए, अब हम आराम से वो करेंगे। लेकिन ये वैक्सीन लगाई इन्हें, उसके बाद ही हम दोनों पॉजिटिव। हालांकि कोयल वालों को बच्चों ने मेरी CT स्कैन की रिपोर्ट दिखाई तो कहते हैं इन्हें भी एडमिट कर दो। A year later, the trauma is still fresh. तो लगता नहीं है कि अभी, मतलब लगता है आ जाएंगे। मैं दुकान में बैठा तो अभी लगता है गेट खोलेंगे आ जाएंगे। सपने में रोज आते हैं कि साथ हैं मेरे बस। Jitendra Singh Shanti, who runs an NGO that provides ambulance services, cremated over 4,000 bodies of COVID patients. शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगभग 4200 डेड बॉडी का क्रिमेशन कराया है, लेकिन मैं वो मंजर भूलता नहीं हूँ। ईश्वर ना करे ऐसा मंजर कभी आए कि 250 तक डेड बॉडी हमने एक दिन में क्रिमेट कराई है। कई जगह तो स्ट्रेचर नहीं थे, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है, वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी बात है, स्ट्रेचर तक नहीं थे, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं थे। Jitendra Shanti and his son, Dr. Jojit Singh, work relentlessly even at a personal cost. So looking at those scenes and then cremating like 100 and 150 dead bodies every day, that thing literally made me slip into depression. And I've been taking medication for that for about 2 years now. I'm still on my depression pills. And that massacre that happened in Delhi, I don't call it a disaster. Disaster is something that goes out of your hands. It was a planned massacre. The government could have saved those lives. Exactly a year back, where I'm sitting, bodies of those who lost their lives due to COVID-19 were being kept as there was no place inside the crematoriums or at the morgues of hospitals. The second wave of COVID-19 devastated millions of families, and while many died because of the disease, many also died because of the underprepared healthcare infrastructure. And while the vacuum that is in our lives because of those who have left us because of COVID-19 can never be fulfilled, the question that still remains is that, are we better prepared exactly a year after the second wave of COVID devastation? With camera person Mohammad Mursaleen and Ashok Mahale, I'm Akshay Dongre for NDTV. Well, shifting focus to the big political story, we're tracking the Delimitation Commission to redraw the electoral map of Jammu and Kashmir has today notified and submitted its much-awaited final report. Of the 90 assembly constituencies, 43 will be a part of the Jammu region and 47 part of Kashmir. The number of total assembly seats in Jammu has risen from 37 to 43, prompting many to ask, is this advantage BJP? The new poll map of Jammu and Kashmir finally approved. The panel that redrew the boundaries of seats submitting its final report, which was identical to the draft that had been rejected by all opposition parties. 2 years after the region was stripped of its statehood and special status, 90 assembly seats and 5 parliament seats have been notified, paving the way for elections. डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है
उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं. हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है. The Commission in a statement says it's factored in the peculiar geocultural landscape, the competing political aspirations of Jammu and Kashmir, vast differences in population density, connectivity, as well as border areas which are prone to Pakistani shelling. The Commission has added 6 new seats to BJP-dominated Jammu against just 1 seat to Kashmir. Even as assembly seats in the Jammu province have been increased from 37 to 43, the electoral representation of Muslims in the Jammu province has drastically come down. Of the 90 seats, 9 seats have been reserved for scheduled tribes and 7 seats have been reserved for scheduled castes. The Commission has recommended 2 additional seats for Kashmiri Pandits and also seats for displaced persons from Pakistan-occupied Kashmir. In their objections filed before the Commission, opposition parties have pointed out serious discrepancies in allotting seats. The BJP has rejected the allegations, saying a long-neglected Jammu has got its due share. कमीशन का सबसे बड़ा ध्येय ये रहा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव को रखा जाए और इसीलिए जब कमीशन ने पहली बार जम्मू कश्मीर गए तो हम सभी लोगों को आमंत्रित किया. पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी नुमाइंदे थे, जनरल पब्लिक के भी नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटीज़ के भी नुमाइंदे थे और हमने सभी लोगों से बहुत विस्तृत चर्चा की. Opposition parties have been alleging gerrymandering as the population was not made criteria for allotting assembly seats. BJP has rejected allegations. Regardless of claims and counterclaims on the fairness of delimitation exercise, it has paved way for holding assembly elections in Jammu and Kashmir after 4 years of central rule. In Srinagar, Nazir Masoodi for NDTV. And Prime Minister Modi is back from Europe and held several key meetings today. He chaired a high-level meeting on the heat wave condition and the upcoming monsoon. The Prime Minister has said all measures should be taken to avoid the loss of life due to heat wave or fire instances, and states have been advised to prepare for floods in advance as well. Alright, so Prime Minister Modi there taking stock of the wheat supply and exports as well. Meanwhile, the controversial citizenship law is back on the centre's agenda. The Union Home Minister Amit Shah today in Bengal said that the CAA will be a reality after the pandemic is over. Mamata Banerjee called it rubbish. जो आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा. मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे. ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है. इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते हो. This is their plan. They have not amended defending of sin. Why they have not bringing this bill to this parliament? We don't want any citizen's right to come. We want all, we have to stay together. Unity is our strength and divide is fall. It is Swami Vivekananda that said. Now after 1 year he came, he should have been hide his face. What his behavior we have seen at the time of election. हर साल आते हैं, गंदा बात करते हैं. And while Navneet Rana has been admitted to hospital after being let out on bail, Navneet Rana was rushed to the Leelavati hospital for some tests, we're told. The independent MP, Navneet Rana, and her husband were released from jail. Those are pictures of them at the Leelavati hospital. They were, remember, arrested on the 23rd of April for trying to create a law and order situation. They got bail yesterday and were released today.